T-minus 30 minutes and counting. Aditya-L1 mission launch range real-time network readiness for PSLV-C57. Aditya-L1 mission ROD and mission director. Benign weather conditions are prevailing for PSLV-C57 launch. Met to ROD and mission director. Benign weather conditions are prevailing for PSLV-C57 launch. Calling P1, switch on the pulsars. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार। नमस्कार, श्रीहरिकोटा के फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस मिशन में विकास स्वर्णकार करूंगा। यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी की समीक्षा सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन सबसे पहले पूर्ण सफलता सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की सकुशल लैंडिंग सफलता के साथ। और इसके बाद 2023 रोवर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग 1000 किलोमीटर लैंडिंग चंद्रमा पर विचरण कर इसके बाद अमित छाप रोवर ने पृथ्वी से इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी चंद्रमा पर विचरण कर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव संभव हो पाया है उतरने वाला कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। यह सब संभव हो पाया है तो सिर्फ इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। अब लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसरो तेजो में सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज तेजो में सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को भारतीय मानक समय के अनुसार 2023 को 11:50 पर प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर चले सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। चले सूर्य की ओर हमारे विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने नाम है और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। आदित्य-L1 बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है PSLV-C57 आदित्य-L1 मिशन। The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the Sun. The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the Sun. I am Madhuri to take you along on the live telecast of with me is my co-commentator. I am Madhuri Swarnkar. The commentary in English. With me is my co-commentator. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. We are about to workhorse rocket, yet another chapter in the glorious space research history of India. Will carry Aditya-L1, the workhorse solar observatory of India, C57 at a vantage will carry Aditya-L1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage in the visibility of Earth-based ground station. To continuously observe the sun. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the South Polar region. India became the first country in the world to safely land. Many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan 3 landing that was being telecast. Many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan 3 landing that was being telecast from Hisar, situated in Bangalore. We bring to you an integration film for the PSLV-C57 that took place in. We bring to you an integration film for the PSLV-C57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रथम कोर चरण S139 अभी आप अपने नॉजल सेगमेंट देख रहे हैं यह है इस प्रथम चरण के चरण S139 शुरुआत होती है और यह सेगमेंट को इसके ऊपर प्रथम चरण संयोजित किया जा रहा है। ऐसे शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट के ऊपर संयोजित किए जाएंगे और संयोजित किया जा रहा है। हेड सेगमेंट 3 मिडिल सेगमेंट सबसे ऊपर संयोजित किए जाएगा और इस तरह तैयार होता है हेड एंड सेगमेंट PSLV का प्रथम चरण कोर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। 57 एक्सेल मिशन तो इसमें मिशन पे यह PSLV बूस्टर C57 में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। इसमें है यह 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर आधारित हैं, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित है। TVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। यह SI TVC इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथकन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, विकास इंजन लगा हुआ है।
prepared in the subsystem preparation facility the second brought to the vehicle of the PSLV rocket of the second launch pad in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle stage of the building of the second launch pad. Here you can see the integrated third stage PS3 on the first stage of the rocket. Being moduled. Here you can see the third stage PS placed inside and PSO being moduled, the respective showed and then handled together and placed inside to be moved to the vehicle assembly building. The respective showed and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. ये नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft prepared and ensconced into a protective container Aditya-L1 spacecraft, where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled, where the environment is controlled and the temperature is controlled. Building again there is a clean room provision to safely integrate it to the dock. At the vehicle assembly building again there is a clean room halves are closed to safely. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which halves are closed. 900. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 PSLV-C57 away, standing majestically. This is PSLV-C57 आपने देखा standing majestically. PSLV-C57 का इंटीग्रेशन वीडियो अभी पूरी तरह तैयार। PSLV-C57 का इंटीग्रेशन जारी हैं, अंतिम जांच जारी है पूरी तरह से पहले की, और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center. We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center. The launch will take place today, Center, Shah, 2nd of September 2023. The launch will take place in the 2nd of September 2023 at 11:50 hours in the PSLV-C57 second launch pad. Version will carry Aditya-L1 spacecraft having a mass PSLV-C57 in its XL version will carry Aditya-L1 mission spacecraft having a mass of 1,235 kilograms by 19,500 kilometers orbit spacecraft in an inclination 235 by 19,500 total mission duration will be in inclination 3,799 seconds or 63 minutes. The total mission duration will be a party 3,799 live telecast 63 minutes website, YouTube, Facebook. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य-L1 अब हम प्रमोशन से करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय प्रणाली में लैग्रेंज मिशन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान कक्षा में पृथ्वी प्रणाली में किया जाएगा। लैग्रेंज 1 पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट चारों ओर लगभग 15 लाख कक्षा में दूर है स्थापित किया जाएगा। L1 पर रखे गए उपग्रह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है कि लगातार L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगा अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके इनका निरीक्षण करने के लिए और सूर्य के सबसे बाहर लगे हुए जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कोरोनल क्षेत्रों का कोरोनल मास इंजेक्शन प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों उपग्रह के गतिविधियों और उनकी विशेषताओं मास इंजेक्शन मौसम की गति फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य-L1 कर्टेन रेजर। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य-L1 कर्टेन रेजर। The PSLV-C57
is prepared to launch the 1,480 kg Aditya-L1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a Halo-1 spacecraft around the L1 point in 4 months, from which it will be placed into a Halo orbit to study around the L1 point and how it impacts the halosphere. The satellite is intended to study the Sun, and how it impacts, which is the center of our solar system and has always fascinated humans. The Sun, a ball which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball, the visible outer surface of the Sun by the known as the photosphere, followed by the visible outer surface of the Sun is known as the photosphere. After initially dropping by the chromosphere, the Sun's temperature abruptly rises after initially dropping through the chromosphere, extremely high temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high value mission of 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study. The Aditya-L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. Investigates the solar corona emission dynamics of coronal mass ejection (VELC). Investigates the solar ultraviolet imaging of coronal mass ejection. Suit payload scans the solar disk in near ultraviolet imaging telescope and detects fluctuations in solar scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. And plasma analyzer package for solar wind particle experiments investigate the solar plasma analyzer package for as well as their energy payloads investigate the solar wind and energy X-ray as well as their energy distributions, and the high energy the solar low energy X-ray spectrometer Helios analyze and the high energy flares from the Sun over a wide spectrometer. Helios analyze the magnetometer payload from the Sun to measure the interplanetary magnetic field at the L1 magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. In situ measurements of charged particles and fields at L1 is equipped to take and is dedicated to measurements of charged particles several energy bands at L1. And is dedicated to study the Sun is located across several energy bands. 1.5 million kilometers from point L1 between the Sun located around 1.5 million kilometers from the Earth made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. And national laboratories all payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories with this mission. ISRO will once again demonstrate its position with space exploration. ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV-C57 Aditya-L1 mission has been 24 hours long. The countdown for PSLV-C57 Aditya-L1 mission during the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The gases cook command, the propellant and control operations have been charged stages, pre-launch pressure levels, the gases cook command, the onboard battery operations have been charged, pre-launch pressure levels. The onboard batteries have been charged, the automatic launch sequence initiation, for which the now in a little while we will go to the automatic launch sequence initiation in the launch and mission control centers. Preparations are underway in the launch and mission control centers. C57 Aditya-L1 mission. ROD to mission director Roger. Range is ready for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Mission director Roger. Stations and network for supporting. अभी आपने सुना Mission director Roger. Network for supporting. उपग्रह निदेशक, TCTC data lovers are टेलीमेट्री connect टेलीकॉम निदेशक तथा यान निदेशक TCTC data lovers are connect टेलीकॉम निदेशक तथा यान निदेशक ने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। सभी आंकड़े संतोषजनक होने के पश्चात Mission readiness review. T-16 minutes and सभी आंकड़े संतोषजनक होने पर for proceeding with the countdown and launch PSLV-C57 have already given clearance mission for proceeding with the countdown. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed
satisfactorily. All operations in the countdown based on the clearance automatic launch vehicle have been completed satisfactorily. And distract network stations based on the clearance prevailing favorable weather conditions. Spacecraft mission director hereby authorizes network to initiate and launch operation favorable weather conditions for the launch of mission director hereby authorizes Aditya-L1 mission launch operation sequence for the launch IST PSLV-C57 that is Aditya-L1 mission 2023. 50 hours IST All today. stations to note, That is mission director 2nd has given September authorization 2023. for the launch of PSLV-C57. All stations to note, mission director has given authorization SDS servers for the launch of activated, ये अभी आपने देखा इस मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री SR बीजू ने इस मिशन का अभी आपने देखा इस मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री SR बीजू ने इस मिशन का sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission to initiate automatic launch sequence for the launch Automatic of launch PSLV-C57 launch sequence initiated for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Automatic launch sequence initiated The for automatic launch sequence, PSLV-C57 the Aditya-L1 initiation mission. has been announced. And जी हाँ ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है ALS शुरू होने के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है होकर सर्वप्रथम ALS शुरू होने के पश्चात सेकंड्स पर RCT का रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T0 पर T-0.3 सेकंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर दौरान कोर स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं लेकिन इस दौरान स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of workhorse PSLV. Is the 91st launch mission as mentioned earlier. PSLV's and XL version with of 6 strap-on motors alongside the core. As mentioned earlier, PSLV's XL version with is being used for the present motors alongside the core. The 25th time S139 motor XL is getting ready being used for the present mission. This is the 25th so far in the year 2023 ISRO has launched SSLV's maiden successful mission. So far in the year 2023 ISRO has launched SSLV's maiden successful mission among the second generation of commercial mission satellites. One commercial mission of carrying the first among the second generation of navigation satellites. Again, one commercial mission of prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Another mission of LVM-3 again, carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system activation in progress. आदित्य-L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का इसको पृथ्वी से आदित्य-L1 बाई 19,500 किलोमीटर यान है इस मिशन कक्षा में इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर अंतरिक्ष निम्न कक्षा में 19 कक्षा में निर्धारित आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी के झुकाव के साथ अंतरिक्षेपित किया जाएगा डिग्री को इस कक्षा में निर्धारित आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर डिग्री प्राप्त किया जाएगा प्राप्त करने के लिए PSLV के और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर आदित्य-L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात अंतरिक्षयान में लगे उचित समय पर मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह पांचवी बार में लगे मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा प्रभावी क्षेत्र से पांचवी बार निकलने में मोटर प्राप्त फायर कर यान को पृथ्वी की कक्षा से छोड़ बाहर निकलने में कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य का समय लगेगा प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर दिनों का समय लगेगा परिक्रमा करना शुरू कर देगा 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा 11 मिनट की दूरी पर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV-C57 in the meantime tell the viewers about the flight events that this mission is among the longest flights of Aditya-L1 is going to last for
This mission is among the longest flights of PSLV. The liftoff coincides with the ignition of 3 minutes and 19 seconds S-139 solid rocket motor. The liftoff coincides with the ignition of strap-ons S-139 while the rocket is at 2.7 kilometers altitude. Four ground-lit the two air-lit strap-ons also while the rocket is at 2.7 kilometers altitude. Strap-on motors is 2 air-lit strap-ons also commence their operation. And air-lit strap-ons are separated from the strap-on launch is 70 seconds at 70 and 92 seconds. And air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle. The core 70 and 99 motor continues to thrust respectively till 110 seconds. The core S-139 motor continues to thrust. The second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine. The optimal performance of the engine is ensured. The second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine. The optimal performance of the engine is ensured. Thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust cutoff or separation of the alleged motors provided for this purpose by additional 3 seconds before the first stage separation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation. PS2 continues operation 200 milliseconds after the separation of first stage. The second stage PS2 the rockets would have attained 255 milliseconds after the separation of first stage. The closed loop guidance by this time the rocket would have attained which compares the present state of rocket to the intended closed loop guidance point is initiated an optimal trajectory, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. At 204 seconds while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude, fairing is dense atmosphere as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude, and the dense atmosphere is no longer present. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 100. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 100.4 seconds into the flight. At an altitude is separated 30 kilometers, 62.4 while the relative velocity of the flight 4.9 at an altitude of 130 kilometers. The third stage PS3 while the relative velocity is 4.9 burns 418 seconds. The third stage time it adds 12 kilometers later and burns 418 relative velocity. During which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity per second tremendously. There is a coast phase of 200 kilometers per second that follows 7.3 burnouts per second, during which there is no thrust being developed, of 200 seconds, but the rocket that continues to be steered. Burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. And the last in the fourth stage of the rocket into the flight, together the Aditya-L1 spacecraft in the fourth stage for a long time thereafter. Together with the Aditya-L1 spacecraft coasts for a long time thereafter. 1396 seconds into flight, the tracking station sets sharp port Blair, Brunei and back. 1396 seconds into flight, the tracking station sets sharp port Blair, Thereafter there is no visibility period of around real-time performance data of the flight. 27 minutes. But thereafter there is no visibility period of around first time for a duration of 30 seconds minutes, and second time for a duration of 472 first time for a duration of 30 seconds. The first burn takes place in no visibility zone of 472 seconds. Is tracked by a shipborne terminal. The first burn takes place in no visibility zone Pacific Ocean, and the second burn about 200 by a shipborne after the completion of second burn of PS4 Pacific Ocean. The injection conditions about for the separation of Aditya-L1 are expected to be of PS4. The injection conditions for the separation of Aditya-L1 are expected to be and the relative velocity of 8.9 kilometers per 7 kilometers, which translates into an relative velocity of 8.9 kilometers 19,500 kilometers, which translates into an orbit of the injection event of Aditya-L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. The injection event of Aditya-L1 low Earth orbit, Aditya-L1 will undergo a series of earthbound from the initial placement and in low Earth orbit. Aditya-L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually Lagrange's point L1, Earth's sphere of influence, in a journey spanning over 4 months. Lagrange's point L1 in a halo orbit around a journey L1 spanning over 4 months. This is how India's first placed observatory halo orbit space-based L1 solar mission will India's first observatory class space-based solar mission will take shape. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी जांच सुचारू रूप से जारी है। 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ एक्सटर्नल पावर सप्लाईज आर बीइंग ड्रॉप्ड। व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश।
इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा। फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य-L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV-C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य-L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All subs are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब
40 सेकंड पर minus 40 seconds, प्रमोशन किया PS2 जाएगा। VSPP open. minus 35 seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, PS2 VSPP open. minus 20 seconds, PS1 ignition RMS arm. minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV-C57 with Aditya-L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ
और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV-C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya
Asayeva charkarti, bharvati, jarhati cha jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. Hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange point in the 3-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies.
Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya-L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer
package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system.
the world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya-L1 mission, Dr. Durgesh Tripati, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Thampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 launch. To start with the Principal Scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya-L1 mission so important, and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the Sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we'll move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the Sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya-L1 helps us through the mission? Thank you, and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya-L1 is a multi-wavelength, multi-instrument, and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV, and visible. Multi-instrument because